reserved them because I have already stated the reasons in the House. Jirova Sri Maharajas Sanajoba Reshamba. Sir, demand to set up a special task force for protection of archaeological sites and the historical monuments of Manipur State. Sir, Manipur State Archaeology established in 1978 has devoted to preservation, protection, maintenance and the conservation of monuments and sites. It has also conducted various exploration and excavation ventures, documentation and registration of antiquities, etc., creating awareness among the general public by publishing books, brochures, organizing seminars, workshops, etc., on archaeological theme. At present, there are 63 protected archaeological sites and historical monuments all over Manipur under the Manipur Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1976. However, some of these protected monuments and sites are located at international borders or state borders area, namely inscribed stones of Maharaj Chandrakriti of Behang, Surachampur, megaliths at Mau, etc., and interior parts of state. Maharajaji, you can only speak, you cannot read. Yes, sir. Please, because you are new. Sir, I will conclude, sir. Yes, brief. Megalith at Fungyar, Anand Khulen, Sandal, Kankui Cap, Okrul, etc. In order to protect and preserve these monuments from encroachers, vandalism, and unwanted incidents, a special task force is required to set up. Therefore, I request the Government of India to set up a special task force for the same purpose. Thank you, sir. Thank you, Rishambaji. Sri Prashantananda. Thank you, Chairman, sir. Sir, historical evidences suggest that in Orissa, music and dance, both were being seriously pursued under royal patronage right from 2nd century BC and that by around 10th century AD. Odissi music had crystallized into a distinctive classical form. The treatises unmistakably point to the fact that Odisha is one among the few schools of classical music and it has a distinctive system of raga and tala and a characteristic style of rendition that is lyrical in its movement with wave-like ornamentation. The tradition always has two components, the written and the oral. Of the many treatises written on the distinctive tradition of music, the bulk were written between 16th and 18th century. 5 of these treatises, such as Gita Prakasha, Sangita Narayan, Sangita Kalpalata, etc., are now available in parts, and 2 are in the form of palm leaf manuscripts. Odissi music is the finest reconciliation of harmony with melody, which loses nothing of the essential quality of the classical music. The individualistic character of Odissi music makes every recital an enjoyable exercise in interpretation. Say it openly. It has its core ragas of its own. Bharat Natya Shastra also mentions about Udra Magadi Prabhuti, which is Odissi. Artali is unique Odisha music. It is nowhere in any other classical music. Therefore, I fervently request the concerned minister to give due classical status to Odissi music, which it deserves, sir. Thank you. Sri Associate. श्रीमती फूलो देवी नेतम। मैं आपको पढ़ना नहीं, संक्षिप्त में बताना। हाँ। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया। मेरा विषय है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को आवास आवंटित के नियमों का शिथिल देने बाबत। महोदय, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं कि अर्धसैनिक बलों के जवानों की महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सरकार द्वारा दिल्ली में रह रहे जवानों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। आवास देने के नियम के अनुसार जवानों की तैनाती देश के अन्य हिस्सों में होती है, तो दिल्ली में दिए गए आवास को 3 सालों में खाली करना पड़ता है। महोदय, जवानों के सामने बड़ी समस्या है। उनके बच्चे
दिल्ली में पढ़ते हैं और आवास खाली होने पर पढ़ाई छुड़वाकर कश्मीर, नक्सल और जोखिम भरे इलाकों में परिवार को नहीं ले जा सकते। कभी कभी जवानों को कई सालों तक एक ही जगह पर रुकना पड़ता है, जबकि अन्य मंत्रालयों में काम करने वाले कर्मचारी 2 साल पूरे करके दिल्ली आ जाते हैं। ऐसे में उनका आवास सुरक्षित रहता है और जवानों का परिवार सड़क पर आ जाता है। वर्तमान में कई जवानों को 23 से 28 हज़ार की पेनाल्टी लगती है। मैं निवेदन करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि शहरी विकास मंत्रालय केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कम से कम 6 साल तक आवास रखने का नियम बनाए। जिन जवानों को पेनाल्टी लगाई गई है उसे माफ़ किया जाए। ओके, धन्यवाद पूर्वदेव जी। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, recently we celebrated the International Women's Day, as always. But it doesn't stop with that. The governments of the day, the political parties and the society are now aspiring to empower women socially, economically, politically and all. But sir, I feel it is very essential to pay obeisance to some of the freedom fighters who belong to the women community, who have been unsung and unheard and unknown in many parts of the country. Sir, it is said that only the Sepoy Revolution in 1857 is the first revolution. Even that they call as mutiny, sir. The British belittled it. It was a revolution. Even before that, in the 16th century, Rani Abaka, the queen of Tulunadu, belonging to the Chauta dynasty, she was so skilled in warfare that she not only protected her fort, but also sieged the Mangalore port and driven away the Portuguese, sir. She is not known beyond the borders of Karnataka. So also Rani Chennamma of Kittur. And so also, sir, Asrat Mahal, who participated in the Sepoy Revolution. And Uda Devi, who shot 32, sir. Sir, it's very heartening to note that Honorable Chairman is writing every week and posting on Facebook about those who fought during the freedom struggle. And one of the main persons is, sir, Rani Velu Nachiyar, Veeramangai Velu Nachiyar of Sivaganga, who was the first ever queen who regained her, not only her fort, but also the regime, her government from the British, sir, which was taken away by them with the help of Hyder Ali, Tipu Sultan and Marudu brothers. Most of it, sir, our commander-in-chief was one Kuili, a Dalit girl that belonged to Arundadir community, which they got Kabla. She was the main commander-in-chief. When Rani Velu Nachiyar was not able to withstand the modern equipment, ammunitions of the British, she applied ghee all over her body, set fire, and jumped into the ammunition room and demolished all the ammunitions of the British and helped Rani Velu Nachiyar. Sir, so many women fighters have been in history, sir, but they stay only within the folk tales and some of the school syllabus. Sir, what I urge is the union government, the CBSE syllabus should include lessons in the textbooks of schools, sir, to inspire our students of the younger days that these women were testament to the spirited and strong-willed women in the past, and so that would help our young students to know about them also. Sir, it's a very essential. Sir, as the Minister of Education, which he concedes to genuine demands. Thank you very much. Thank you, Shivaji. It's a very good issue. It's a very important issue for the nation. There are such heroes and heroines in different parts of the country, but their life, their sacrifice are not known. So CBSE as well as state, both of them, they should seriously think about this. The suggestion given by Honorable Member. Sri Subhash Chandra Bose Pidi. Subhash Chandra Bose ji. Yes, sir. Here. Honorable Chairman, sir. Good morning, sir. Sir, this is for the kind consideration of the Honorable Minister for Law, sir. Honorable Chairman, sir, I would like to bring to your kind notice that some of the people belongs to minority communities, retired employees, senior citizens, and others are used to sell their properties
with intent to encash their assets and fulfill their life desire. But unfortunately, while at the time of selling their properties, many of the purchasers used to enter into the sale agreements with the sellers by giving petty amounts as part of consideration, and after entering into the agreement, they are not performing the agreements years together. Consequently, the seller failed to fulfill their life desires. Sir, the reasons are the purchasers intentionally delay in performing their agreements entered between them due to reduce the agreement prices and filing suits in the courts and thus delay the matters. Consequently, the sellers not getting the agreements or considerations with the time of desired by them. There are some occasions where the purchasers went to courts and filing the suits even after 25 years and 40 years of delay. It is an appropriate place to submit that. I am giving two citations, sir. One, Rajanarayan Sareen versus Lakshmi Devi and others in 2002 filed a suit in Supreme Court after 40 years after the execution of the sale deed. That is the pity, sir. Number two, similarly, the Orosi Ben, Sri Orosi Ben and versus Krishnakant Munuprasad Trivedi. This is also reported in AMLJI Supreme Court, sir, reported in 2019. A suit was filed after 25 years of the sale deed was occurred. This is very pity issue, sir. I appreciate. Bosji, It is appropriate place to submit that. you have to conclude. The reasons for the delay is due to the second limb, Article 54 of the Limitation Act 1963. The second limb of Article 54 of the Limitation Act 1963 will not prescribe any limitation for filing the suit for specific performance of contracts, sir. So taking this advantage of the same, the purchasers are delaying in performance of contracts. Sir, my prayer is... No, I can't extend it because Subhash Chandra Bose-ji, you are a senior man in the legislature. It will not go on record even if I say also. That is the problem. Time is... Please, you have to conclude. Say... Please. You should have said it beforehand, na? That would have gone on record. Very important point. But it's not going into the records. Right. Sri Ashwini Vaishnav, please understand anything said beyond 3 minutes will not go into record. The very purpose is to go it on record so that the concerned minister can apply his mind and do something. Sri Ashwini Vaishnav. Honorable Chairman, sir, I draw the attention of the House to a shared global concern about racism. There appears to be a continuation of attitudes and prejudices from the colonial area, especially in the United Kingdom. Chairman, sir, the recent case of Rashmi Samant, a young student from Karnataka, Udupi area, is a classic case in point, sir. She is a bright student from Karnataka. She persevered and overcame all the challenges to become the first Indian woman president of the Oxford Students' Union. What was the treatment meted out to her, sir? Shouldn't this diversity have been celebrated? Instead of that, she was cyber-bullied to the point that she had to resign. Even the Hindu religious beliefs of her parents were publicly attacked by a faculty member, and that also went unpunished. Chairman, sir, if this happens at an institute like Oxford, what is the kind of message that goes out to the world? The second instance is the widely publicized interview of Meghan Markle, one of the erstwhile members of the royal family of the UK. A behavior of a society is actually a reflection of its beliefs and value systems, Chairman, sir. If such practices of racial discrimination are followed at the highest level in a society, what would be the following at the lower level, sir? And these two instances are not isolated instances, Chairman, sir. The treatment of migrants and their segregation in the UK on racial basis is very well known all over the world, sir.
There is a recent report, Public Health England, which reported that the death rate among people of Asian origins because of COVID-19 is higher than the death rates in other communities in the UK, sir. Doesn't this raise a major question about the equitable access to health, and indeed the entire basic human rights issue can be raised because of this, sir? Sir, we are a country with a large diaspora in the UK. There is a natural concern for all of us. The era of colonialism is over, but the mindset seems to be still persisting. This is where the UK has to change. If it wants our respect, it has to change. Through your kind officer, I request the Honorable EM, External Affairs Minister, to take up this matter with the UK government. Right, the Thank Minister want to respond? Yeah. Jaishankarji, please. So let Yeah, we all sent your names. me first of all commend the honourable member for bringing up such an important issue. I note the sentiments of the House, government does, and I do want to say, sir, that as the land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism, wherever it is, particularly so when it is in a country where we have such a large diaspora. As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. Thank you, sir. Thank you. It's a very serious matter. Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir, can I stand and speak or should I sit? Huh? Can I stand and speak? Oh, yes. Sir, The only thank you, thing is you are taller like me and the mic Yes, is sir. smaller Yes, sir. like mine. Thank you so much, Chairman, sir, for allowing me to raise this important issue. In mid-2020, as per the report that has come in the newspapers, a group of ministers was formed where 9 ministers were asked to come forward with suggestions on how to neutralize some media agencies which were speaking up against the government, not against the nation, but against the government, and how to neutralize them, and how to promote those agencies which are talking pro-government. I would want to ask through your chair, sir, how can we discriminate in a democracy between those agencies which speak up for the cause of the people of the country and speak against the government and question them? Doesn't this go against the freedom of speech as well as press freedom that has been consistently sliding down as far as India is concerned? I think this is a matter of serious concern and should be raised through your channel, sir. Right, Thank you. Srimati Vandana Chavan, Rikkar Bhejna. No allegation in 0 hour, but issue raised has to be taken note. Vandana Chavan ji, kahan hai? Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to raise issue, a very important issue before this House. That is the need to criminalize marital rape. So since decades now, there have been demands from several quarters, several women's organizations, groups, asking that marital rape has to be made a criminal offense. So after the lockdown especially, we have seen that these instances have increased, and in fact, the seriousness also amplified to a great extent. So I feel proud as a woman of this country that after we have been a signatory to the CEDAW, which seeks to eliminate any form of violence against women, we as a country have been a front runner in the whole world to make certain legislations to protect women. We passed the Domestic Violence Act, we passed the Sexual Harassment at Workplace Act, the POCSO Act, and several others. So even after the unfortunate Delhi gang rape, we saw that the government proactively set up a committee in the form of Justice Verma Committee, which came up with recommendations to see what amendments need to be made in the law to give protection to the women. And as a consequence, we passed the Criminal Law Amendment Act in 2013, whereby we widened the definition of rape. So with such a positive approach towards women, why then are we not treating marital rape as an offense? So apart from demands from several quarters, the CEDAW also in 2013 has expressly recommended that the Indian government should criminalize marital rape. Back home, the Justice Verma Committee recommended the same.
So more than 100 countries in the world have made marital rape an offense, and we fall only amongst the 36 countries which have not. So I wish to submit that the government argument on several platforms that criminalizing marital rape destabilizes the institution of marriage or would be a tool for the wives to harass their husbands. So this argument is absolutely not palatable. So when a husband beats his wife or subjects her to mental or physical cruelty, it's an offense. So if he forcibly sexually abuses her, does this not amount to an offense? So this is an absurd argument. Sir, I look at you as an extremely sensitive brother and father to those millions of sisters and daughters of our country. I urge you, sir, to direct the government to address this issue, to revisit this issue, and make sure that marital rape is made an offense. Thank you. Thank you, sir. We have to evolve consensus. It's an important issue. Yeah, right, ma. लिख कर भेज दीजिए जी. डॉक्टर अशोक बाजपेयी. मान्यवर सभापति महोदय, आज मैं एक बड़े गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, हिंदुस्तान की लगभग 5 करोड़ आबादी में और मध्य उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जिलों में अवधी भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है और आज से नहीं, एक अनादिकाल से अवधी भाषा का प्रयोग इस क्षेत्र में होता रहा है। मान्यवर, देखें कि अवधी भाषा में जितना समृद्ध साहित्य रचा गया है, चाहे तुलसीदास जी द्वारा रचित मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन से जुड़ी हुई रामचरितमानस हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बरबय रामायण हो, छप्पर रामायण हो, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, इसके अलावा तमाम उसमें विधाएं जो अलग अलग, चाहे छंद हो, दोहा हो, सोरठा हो, सवैया हो, इन सब की रचना अवधी भाषा में हुई। जितना समृद्ध साहित्य अवधी भाषा में मिलता है मान्यवर, वो शायद ही किसी अन्य भाषा में हो। भगवान राम के जन्म स्थान से जुड़ी हुई अवधी भाषा, तब उस काल से ही अवधी भाषा का प्रयोग होता रहा है। और आज जब इस वर्ष हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके जीवन को, उनके जीवन चरित्र को हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के जनमानस से जोड़ने के लिए अवधी भाषा का जो योगदान है, जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करके भगवान राम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, तो आपसे आग्रह है, एक ऐसे समय पर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 500 वर्षों के बाद, तो अवधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। मान्यवर, अनुच्छेद 351 संविधान के वैसे भी संघों को ये अधिकार देता है, ये कर्तव्य देता है कि हिंदी भाषा को कैसे समृद्ध किया जाए, वो प्रयास किए जाएं। अवधी भाषा की समृद्धि से हिंदी भाषा समृद्ध होगी और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को भी हिंदी भाषा को और ज़्यादा समृद्ध बनाने में सहयोग होगा। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि वैसे भी आपका बड़ा उदार दृष्टिकोण रहा है भारतीय भाषाओं के प्रति, और आपने समय समय पर भारतीय भाषाओं में चर्चा करने की अनुमति भी प्रदान की है। तो आपसे मेरा ये आग्रह होगा इस विषय पर भी कि अवधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के निर्देश भी सरकार को देने की कृपा करेंगे। मैं अनुग्रहित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा. Honorable Chairman, sir, the Indian delegation for Olympics to be held later this year is already preparing, and the Ministry of Sports is working very hard with the delegation to ensure that we do a wonderful result in the coming Olympics. Sir, one area of concern which was found by the Departmental Standing Committee, and the report is already tabled, sir, and you also were a part of that video conference in which was discussed with you, where there is a need for COVID vaccination of our athletes and sports persons who would be appearing and would be contesting in the Olympics in 2021. Sir, there are approximately 150 sports persons and athletes who would be participating, about 150 support staff, and presently about 700 support staff and athletes are there practicing with them, totaling about 1,000. Sir, there have been repeated discussions between the Ministry of Health and the Ministry of Sports for COVID vaccination. So the Departmental Standing Committee under the leadership of Professor Sahasra Buddheji had already requested that this be taken up in a priority for COVID vaccination. So biobubbles are something under which the athletes are presently working.
Sir, but if the COVID vaccination is provided at the earliest, it would not only reassure the sportspersons and athletes and the support staff, but it would also bolster our efforts for the Olympics in 2021. Therefore, sir, I seek your kind indulgence and your kind support to direct the Ministry of Health to kindly notify that an immediate and urgent attention is provided to the COVID vaccination of the Indian Olympics team so that they can practice well. I have been told informally by the Ministry of Sports that they can actually take those doses in their local areas where they are. But if this is taken up at an earliest, it would really help our efforts for the Olympics, sir. Thank you. Thank you, Ji. Good issue. Sri Pratap Singh Bajwa. Thank you, sir. I'll be speaking in Punjabi. हाँ? I'll be speaking in Punjabi if you allow me that. sir. आपने मुझे आपत्ति नहीं ठीक। मैं तो खुश हो जाऊंगा मगर नोटिस पहले नहीं दिया तो ट्रांसलेशन ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ sir. ठीक बोलिए ਸਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ 3% ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 3% ਤੋਂ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 2 ਸਰ GST ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਰਜੀਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਜੇ ਕਣਕ ਚਾਂਦ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਜੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕਣਕ April ਦੀ 13 ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਿਯਮ Sir, the FCI to tighten food grain procurement norms. It has just come 1 month earlier to the procurement. Policy makers, farmers see it as another attempt on the state and the ongoing stare against. तो मैं पूछना चाहना सर ग्लोबल वार्मिंग की किसी किसान के हाथ है तुसी नॉर्म्स हुण 1 महीना पहले लेके आ रहे हो कि the moisture reduce moisture content from 14 to 12%. Only then we will buy. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਿਡਿਊਸ ਫੋਰਨ ਮੈਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਫੋਰਨ ਮੈਟਰ ਇਨ ਦੀ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮਰਸ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਪ੍ਰੀ ਹੈਕਟਰ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਫॉर ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਪਲੀਜ਼ Thank you. Honorable members, honorable members, we have with us seated in the special box His Excellency Mr. Durte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union. On behalf of the members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to him and wish our distinguished guest an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during his stay here, he would be happy to witness our parliamentary system and know more about our own country and our people. Through him, we convey our greetings
and best wishes to the IPU Secretariat and its members, countries. Thank you. Welcome. Sri Arnath Singh Yadav ji. माननीय सभापति जी, मैं कैंसर रोग के तेजी से बढ़ते हुए फैलाव की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से 19 तक 3 वर्षों में 39,76,181 कैंसर के रोगी हुए और इनमें से 23 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। मान्यवर, दिन ब दिन कैंसर की दृष्टि से बड़ी भयावह स्थिति बनती चली जा रही है और महोदय, चिंता का विषय सबसे बड़ा यह है कि इस रोग का फैलाव 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में भी बढ़ने लगा है और देश भर में प्रतिवर्ष के बाल कैंसर रोगियों की अनुमानित संख्या 70,000 से 1 लाख के करीब है। मान्यवर, यह एक बहुत ही डरावनी स्थिति बनती चली जा रही है। महोदय, शोधकर्ताओं के अनुसार कैंसर रोग के तेजी से फैलाव के लिए रसायन युक्त व नशीले पदार्थों का सेवन, अनियमित हमारी जीवन शैली और भूमि, जल व वायु का अशुद्ध होना विशेष कारण है। इसके लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों तथा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर बंदिश लगाना आवश्यक है। महोदय, देश में कैंसर से सर्वाधिक मौतें नशीले पदार्थों से होती हैं, लेकिन हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक एक विचित्र खेल चल रहा है और इस खेल पर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी एक मत है। महोदय, सरकारें शराब के लाइसेंस देकर देशवासियों को शराब पिलाती हैं और दूसरी ओर नशा मुक्त अभियान पर हजारों करोड़ रुपया भी खर्च करती हैं। सरकारों द्वारा शराब से राजस्व प्राप्त करने के लिए देश के नागरिकों को मौत के मुंह में ढकेलना मेरी दृष्टि में जघन्य अपराध है और माननीय, ये खेल बंद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रबल शब्दों में प्रबल आग्रह के साथ मांग करता हूं कि सरकार कैंसर के फैलाव को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करे और देश भर में शराब व नशीले पदार्थों का जो सरकार व्यापार करती है वो बंद होना चाहिए। धन्यवाद। Whoever want to associate a larger issue, please send your name. Sri Haridwar Dubey ji. Sri Haridwar Dubey ji. मान्यवर, विश्व विरासत में शामिल भारत का ताजमहल देशी विदेशी पर्यटकों के घूमने का सबसे बड़ा पसंदीदा स्थल है, जहां प्रत्येक वर्ष लगभग 8 मिलियन पर्यटक ताजमहल की सुंदरता देखने आते हैं। लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यटन की सेहत को खराब कर रहा है और अपनी सुंदरता खो रहा है। विदेशी और देशी पर्यटक प्रदूषण के कारण ताजमहल से दूर हो रहे हैं। ताजमहल की सुंदरता खराब होने के कई कारण हैं। ताजमहल टूरिज्म जोन के चारों ओर कचरा एकत्र होना, पेट्रोल डीजल के वाहनों की आवाजाही या द्रव्य की चोनियों से उठने वाला धुआं जो अम्लीय वर्षा करता है। और अभी उसके लिए ताज की सुंदरता में 4 चंद लगाने वाली यमुना नदी भी अब उसके लिए मुसीबत बन गई है। नाले में तब्दील हो चुकी यमुना की गंदगी, पनपे कीड़ों के समय समय पर ताज की सतह पर। दुबे जी, पढ़ना नहीं बोलना है। अब इतना अनुभवी है और आगरा का है, तो ताजमहल के बारे में बोलने में क्या, बोलिए, पढ़िए मत। भूरे और गहरे रंग की दाग छोड़ देते हैं। ताज पर आज भी ये दाग अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों बना हुआ है। यमुना में उठने वाली दुर्गंध की भी पर्यटकों को परेशान करती है, लेकिन उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। यमुना नदी आज केवल दिल्ली से निकले हुए नाले के रूप में ही खड़ी हुई आगरा में बह रही है और इसके कारण ताजमहल की सुंदरता खराब हो रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी महोदय समय समय पर उसकी ओर कदम उठाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश हुआ है कि इस पर चिंता जताई और उत्तर प्रदेश सरकार को ताजमहल के संरक्षण के लिए विजन डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। आपके माध्यम से महोदय निवेदन है कि पर्यावरणीय क्षति के ताजमहल की सुंदरता बचाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। ताजमहल टूरिज्म जोन के चारों ओर सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण न हो, न ही कचरा एकत्रित हो।
इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं और कठोरतम नियम लागू किए जाएं। अतः आपकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय पुरातत्व संरक्षण को आगाह करें और आवश्यक कदम उठाएं ताकि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भारत की शान विश्व धरोहर ताजमहल प्रदूषण की भेंट न चढ़े और अपनी पर्यटकों के बीच आज भी सुंदरता बनाए रखें। Right. Jai Dubey ji. धन्यवाद। ये 0 over. Sri Pradeep Tamta, special mention I have allowed. Pradeep Tamta है? है नहीं। Sri